Can we now start? Yes, sir, we can start. Okay. Good evening to all the participants who have joined online. A special thanks to my student Raghav, who has asked me to take up this. So, friends, I am Dr. Kush Kalra, and as informed by him, yes, I am a writer, academician. I have taken pro bono cases also. And one little correction, Raghav was mentioning that Babita Punia case. No, that was not the case. Actually, the case is the NDA one, wherein after 75 years of independence, the women for the first time, they got the entry. And it is with regard to the permanent commission as well as the induction of females in the permanent sector of the army, that is National Defense Academy. And with that case, the gates for the Sainik schools as well as the Rashtriya military schools are also open, which were closed for more than 100 years. So that was the thing I just wanted to highlight. So today we have all joined for this particular lecture, that is the Right to Information Act, the issues and challenges, the privacy aspects as well as the exempted information. So friends, we all know that yes, Right to Information Act, it was an act being created in the year 2005. On 12th of October 2005, it was being enacted. The purpose is very much clear. When we see the preamble of this act, we see that yes, this act is created to provide information. But from any of the participants who have joined, can anyone tell me what kind of information a person can ask from and from which authority? Say for an example, can we ask from a private person or a private authority any information? So can any person from the participants reply so that I can understand that my voice is reaching to them? Or you can reply in the chat box. It is there? Yes, sir. Guys, you can reply in the chat box. And अगर किसी को mic use करना है, you can raise your hand. I'll give you the access. Okay, that is the issue. Okay. If anyone can just write that for what purpose or from what authority you can ask this particular RTI Act is applicable. So okay. Mr. Adi has said government record. Yes. So definitely from the act itself, it is very much clear that only we can, someone has written, no sir, we can get information that is private. Let me just clarify from the beginning itself that this act as per preamble is applicable to government and its authorities and Article 12 of Constitution, that is state. So if you have mentioned not that we can get the information from private person also, until and unless some funds are being utilized and that funds are public funds and being a private authority you are using, in that case it is applicable. But you being a private person, you have no, if you are mentioning societies, in case of society also, if you are a private person, your funds are private, you are not liable to suppose or disclose until and unless you are using something or some particular fund of government is used, then you are not at all liable. I being a private practitioner, you being a private person, you are earning, no one has a right to ask you to inform anyone about your personal earnings or personal privacy records. This thing was ultimately cleared in the case of this High Court. This case went from High Court to the Supreme Court, where the personal information with regard to the assets of judges, it was being asked, as well as the question was to provide the medical records of the judges. So this person who was a activist, RTI activist, he filed the case SC Agarwala before the Supreme Court, wherein he particularly asked for the assets of the judges as well as the medical records. Supreme Court agreed that yes, assets of the publics then can be publicly provided for as they fall within the definition of information. But when it comes to the point of providing of
medical records. They interpreted that yes, it is an issue. The issue is that yes, someone's privacy is being infringed, because we have right to health, but yes, we have a right to privacy, and within the term of privacy you cannot ask for someone's personal information. So on the point of private and personal, from the beginning I am making it clear that this Right to Information Act 2005 is only and only applicable to the government related information, or you may say that the Article 12, that is those, the legislature, the establishments which are within the domain of the state or the center, only to them they are applicable. I have also simplified it that yes, a person's private life, private records cannot be accessed for in right to information, which most of the time people they do the mistake. And that is actually where the right to information is not at all applicable. The preamble you can read and have a look at. If you can, Raghav, just share the preamble thing with them of the RTI Act 2005. So now coming on to the point of the origin. Yes. See, this act came in the year 2005, but before this act, we have our constitution, which we get it enacted in the year 1950. So from, if you see the Constitution of India, Article 19(1)(a), we have this particular right of freedom of speech and expression. Every citizen of this country have the right of freedom of speech and expression. Actually, this particular right of freedom of speech and expression is related to the information part. A person can have a free speech, free information, free expression only if he has particular information in that particular field. You cannot say something random or illogical or defame someone. If you want to speak something with regard to the democracy, something with regard to the government, something with regard to the public interest, you need to be well aware of. Otherwise, you may fall within the context of definition, and you know how the things are turning up these days when people are saying that even they are not getting the relief till High Court for saying someone's name in a political speech, and how it is has been termed as an defamation. And today the court has also issued the notice to the complainant as the government as to explain how this is a matter of defamation. So particularly, I am just on the point of this that, am I audible, Raghav? Raghav, I am audible? हाँ जी sir, you're audible. Okay. बिल्कुल आवाज आ रही है. So, particularly on the point of that, this, the origin of this act is actually in the constitution, that is the roots of this act is within the constitution. Parliament even tried for passing of the Freedom of Information Act, which never got the acceptability. Then even their Freedom of Information Act was of the year 2002, and some of the provisions of that act actually are in the Right to Information Act 2005. And particularly if we see the movement that happened of the workers, wherein they were not getting the wages in Rajasthan, and they filed for the information asking about their wages. So these are some of the movements which particularly pressurize the government to enact a law related to the information. Obviously, we are living in a democracy, and democracy survives on public trust, information, accountability, transparency. So this act ensures that transparency and accountability is there. Obviously, this act particularly highlights the issues of non-providing of information. That is, today we have this particular topic we have to deal, that exempted information. And I will give you live examples. If you could just take us to section 8, Raghav, section 8. So participants, if you see the
wordings of this particular section 8, it starts with exemption from disclosure of information. This act just not only provides that yes, anyone or any citizen can ask for any information. There are certain informations which no public authority has to give to the information seeker. Definitely, we have some good relations with countries all over the world, and you cannot just ask for information which could affect the sovereignty and integrity of India. I remember my time in Central Information Commission, wherein second appeal was filed. Because generally what happens is that you file a RTI with PIO, and if that particular information is not being particularly provided to you, you file an appeal, first appeal within the same organization. And if even that is not answered, you have a right. And if that particular authority is a central government authority, you have a right to put a second appeal under section 19. Under section 19 before the second appeal. Raghav, we have all the participants who are comfortable in English, or I need to speak something in Hindi also? So we can keep on mixing. Everybody is Okay, comfortable mixing. with everything. Yeah. Okay. तो मैं आपसे कह रहा था, I was just telling that I was working in Central Information Commission. तो वहां पर मैंने, I have seen the second appeal. The person was adamant that he has not received the information that how the death of Subhash Chandra Bose occurred, and he filed the second appeal because he was not satisfied by the reply of PIO and this particular first appeal authority, first appellate authority. So in second appeal, the decision or the order of the Central Information Commission was clear that it particularly and squarely falls within this particular section, that is section 8 subclause 1. That is that because it will affect our relations with some other country, that is why government has a right to, although it is a matter of public interest, that is why all the records related to Subhash Chandra Bose, they have been particularly put on the website. But yes, that particular questions, the way they have been asked for, it was falling within this particular section 8.1. Also, if you see the issues which are before the court and they are sub judice in terms of that they are not finally being decided, an information seeker has no right to ask for the information related to that. Say for an example, today you wanted to know that how or what are the pleadings which have been put up, although if that is available via a video, that is fine. But if you want to exactly check that what exactly has been put up by the party today, which is facing the defamation case and a high profile political matter, and if that is a matter of public court record, you cannot ask for the same until and unless that particular case is full and finally decided by the court. तो देखिए, जब तक कोर्ट से वो केस फुल एंड फाइनली डिसाइड नहीं होगा, आपके पास उस पर्टिकुलर मुकदमे की जानकारी लेने का अधिकार नहीं है. ये प्रोहिबिटेड इंफॉर्मेशन में है, एग्जम्प्टेड इंफॉर्मेशन. या आप कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मांगना चाह रहे हैं, यू आर आस्किंग फॉर सम इंफॉर्मेशन जिससे ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट हो सकता है, जिससे पार्लियामेंट का या स्टेट लेजिस्लेचर का ब्रीच हो सकता है, या कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट आप मांग रहे हैं जिससे कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द हाउसेस, दैट इज लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिनमें ब्रीच हो सकती है, आप इनसी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी एंड वो रिटेन बैक की जा सकती है. ऑल्सो now you cannot just ask for some sort of trade secret or intellectual property under RTI. That is obvious. Obviously,
there is, if someone is holding a copyright, a patent, a trade secret over something, you cannot just file an RTI and ask for what is the formula of this particular thing. Also, Coca-Cola, Pepsi, they are private entities. They are also not falling, or they have no concern for the RTI Act. As in the beginning itself, I have already told that for a private entity, until and unless government fund is involved, or until and unless government has substantially funded the private entity, that won't be a matter that a person can ask for a information from the private entity. Also, a person has no right to ask for information wherein the larger public interest is affected. See, public interest is a very wide term. In many of the judgments, courts have tried to interpret that what is public interest. In general sense, it means that yes, which will affect the public at large. And an information seeker needs to establish before the forum that yes, whatever he is asking, it has some larger public interest involved. You cannot set your goals by filing RTIs. You cannot set your private goals by filing RTIs if it has no relation to you. Say for an example, you are asking for the bank details, you are asking for the financial details of a builder from whom you have purchased the house. And if you think it is a public interest, you need to establish before the authority. And in any case, it is going to be rejected, because asking for private account details, financial details of someone, it would be a matter of infringing of person's privacy, and it would not be a matter to be taken up in by filing RTI. But let me give an example. बहुत बार ये होता है कि जो मेंटेनेंस केसेस हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा रहता है कि हस्बैंड कहता है कि मेरा कोई कमाई का जरिया नहीं है और मैं पैसे नहीं दे सकता. ऐसे केसेस में देखिए आरटीआई एक बूंद बन करके आया है और ऐसी महिलाओं को बहुत सहायता करी है आरटीआई ने, क्योंकि both husband and wife are considered one and same in law, and wife is not being considered as a third person. So they have been provided with this particular RTI information if they have filed before the income tax authorities with the banks, that how much earning or how much is the total bank balance of their husbands. So in those cases, it is a matter of interest of that particular wife, because that particular wife is asking for maintenance and husband is denying and taking a false protection under law that he has no money to give. Also, this act is not applicable when it comes to receiving of foreign funds. Obviously, being a country like India, democratic one, our government, they receive a lot of foreign funding. In COVID times, we also were a part of giving a lot of foreign funding to Nepal or our neighboring countries. So whatever fund we give or whatever fund we receive from the government, you cannot ask for. But there is a caution in that. If you establish that that fund is being misused, there is a larger public interest being involved, and that needs to be disclosed, you can file an RTI. But see the case of Rafale. In Rafale, many RTI activists, they filed the RTIs with regard to the price of Rafale aircrafts. And it was a very big political controversy because previous government have decided something else, and the next government, they have purchased this for a much higher price. But see, the government, even before the Supreme Court, they took the stand that yes, it is a matter falling within 81A, that is affecting the sovereignty and integrity of India. Also, the disclosure of such information which actually affect the defense capability of our country. So in those terms, this particular information also was not provided. You can check the Supreme Court judgment also, wherein they didn't agreed for a
full and public disclosure of the amount and the process which was being followed while purchasing this particular Rafale aircrafts. Also, आपकी कोई क्रिमिनल ट्रायल चल रहा है और उस क्रिमिनल ट्रायल में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मांग ली जाए जिससे पता है कि वो इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर करेगा, एक क्रिमिनल को सपोर्ट करेगा और उसके प्रोसिक्यूशन को नहीं होने देगा या उसे जेल से बाहर आने में सहायता करेगा, तो ऐसी भी कोई इंफॉर्मेशन अगर आप मांगते हैं तो आपको नहीं दी जाएगी. बट यहाँ पर एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि most of the Supreme Court interpretations as well as the High Court, they have clarified that FIR की कॉपी at least to the accused person को mandatory है. उसके बगैर जस्टिस नहीं हो सकता, फेयर ट्रायल नहीं हो सकता, वो अपना डिफेंस कैसे लेगा? क्योंकि ऐसे केसेस आते हैं क्रिमिनल ट्रायल में कि जहां पर एक्यूज के पास FIR की कॉपी नहीं. आप समझ सकते हैं कि बिना FIR की कॉपी के वो अपना डिफेंस कैसे प्रिपेयर करेगा, उसको कैसे पता लगेगा कि उसके अंडर क्या चार्जेस. देयरफॉर RTI की एप्लीकेबिलिटी वहां भी है कि एक्यूज्ड RTI में सिर्फ एक्यूज मांग सकता है. इस बात को प्लीज गौर से सुनिएगा, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, कि RTI में FIR की कॉपी ओनली एक्यूज्ड कैन आस्क फॉर. और इफ एक्यूज्ड इज इलिटरेट और हैज नो means in terms of money because he is confined, his next friend with his authority can ask for, या उनके वकील. Otherwise, no third person who has no relation with that particular accused against whom the FIR has been filed has no right to ask for the FIR copy. यहाँ तक बात क्लियर है? Any doubt? Raghav, am I clear? I mean, am I audible? Sir, you're audible and Okay. मजा आ रहा है and everybody is listening. एक question भी है हमारे पास. Yes, please repeat because I am not able to see the chat. If you can just tell me the question. Yes. हाँ जी sir. I am giving mic to Mr. Shadab. He'll be asking Okay. you. Yes, please. Shadab bhai, you have the mic. Good evening. कैसे हैं आप? शादाब जी, आपका माइक ठीक काम नहीं कर रहा है, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है. हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है जी. आवाज मेरी अब आ रही है. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड इंफॉर्मेशन. सब पहले मुझे ये पूछना था कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज जैसे आपने मेंशन किया RTI की रिव्यू में नहीं आती है. मैंने ऐसा, चलिए ठीक है, पहले क्वेश्चन पूछ लीजिए जी. नहीं, मुझे वही पूछना था, जो सोसाइटीज जिसमें जैसे प्राइवेट सोसाइटीज, हाउसिंग सोसाइटीज करके ज्यादा, तो एक आर्टिकल है जिसके बेस के ऊपर है कि दे फॉल अंडर द प्रीव्यू बिकॉज इट इज नॉट अ पब्लिक मनी बट इट्स अ मनी ऑफ अ कॉमन एंटिटीज. मैंने पब्लिक इंटरेस्ट की अभी एक लाइन बोली थी है कि अगर आप किसी जगह पर पब्लिक इंटरेस्ट को डिफाइन कर दें या पब्लिक इंटरेस्ट को, देखिए सोसाइटीज में भी ये होता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज दे कलेक्ट द फंड, राइट? Now, if you establish before the authority that this fund is being misutilized and public at large is being affected and this is not their money, देखिए पब्लिक से अगर पैसा इकट्ठा किया है तो वो फंड फिर उनका नहीं हुआ, it is not private, it becomes a public. So now the applicability of RTI will be into existence. Are you getting me? आपके जो क्वेश्चन में है आपने खुद ने ही क्लियर किया है. देखिए मैं कहां पर नहीं एप्लीकेबिलिटी की बात करूं, लेट मी जस्ट क्लैरिफाई दैट, फिर आप मुझे आगे जो आपकी बात है वो पूछेगा. देखिए प्राइवेट पर्सन जैसे आप हैं या मैं, ठीक है, हमने किसी का कोई पैसा नहीं लिया, ना सरकार से लिया, ना कोई फंड इकट्ठा किया. इफ टुडे आई एम अर्निंग एंड स्पेंडिंग and I am making buildings or I am doing constructions, no one has a right to ask for the source of income of mine. No one has a right to ask for my bank account, my private details. But the day you become an MP, the day you become an MLA, the day you become a constitutional functionary, the day you started collecting the public funds, जो कि आपने कहा कि कोई कोऑपरेट प्राइवेट सोसाइटी कर रही है, तो अब आप पब्लिक इंटरेस्ट की, आपको कोई ऐसा तो पैसे दे नहीं रहा है. अगर आप कोई सोसाइटी होते हुए कोई अच्छे काम के लिए करेंगे, रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के साथ भी ये हुआ, ये ऐसे आपको ऑर्डर्स मिल जाएंगे. अगर नहीं मिलेंगे तो प्लीज राघव गिव माय डिटेल्स.
तो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस भी कई बार जो हैं उनके अगेंस्ट आरटीआई में लोग गए और ये कहा कि इनके पास हमारा फंड है, और कोर्ट ने कहा कि डिस्क्लोज करिए, कमीशंस ने कहा डिस्क्लोज करिए। इसीलिए मैं फुल इंटरप्रिटेशन में, देखिए मैंने इसको बहुत गौर से देखा। मैं आपको एक प्राइवेट स्कूल का भी एग्जांपल दे सकता हूँ। ये ऑर्डर दिया था माधवभूषी श्रीधर ने, वो न्यूज़पेपर में रिप्रेजेंट हुआ था ऐसे कि दैट नाउ प्राइवेट स्कूल्स विल बी अंडर आरटीआई। आपको पता है किस तरह से हेडिंग प्रेजेंट की जाती है। तो आई वाज क्यूरियस, बट देन आई रेड द होल न्यूज एंड द ऑर्डर। एक्चुअली दैट स्कूल took the fund from the CBSE and there was some misappropriation being done for those particular funds. So obviously now that RTI Act is applicable to them. So that was the whole scenario. अब आप बताइए जी, कोई बात जी? मेरा भी सवाल वही था, ये जैसे सोसाइटी शुरू में जो बात चली कि सोसाइटीज नहीं आती है, मुझे ध्यान में थी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में फॉल करती है। जी जी, मैंने इसीलिए आपसे कहा कि पब्लिक इंटरेस्ट जहां पर हो, और आपको देखिए याद रखना आर्टिकल 12 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आप उसमें देखेंगे कि विद इन अदर अथॉरिटीज द कोऑपरेटिव सोसाइटीज और द सोसाइटीज विच आर पार्शली और फुल्ली फंडेड बाय द गवर्नमेंट इज फॉलिंग। अगर आप अदर अथॉरिटीज का उसका एग्जैक्ट मीनिंग समझे, यहाँ पर आपने कहा है खुद से कि वो पैसा पब्लिक यूटिलाइजेशन के लिए हमने दिया। Now it means that that fund is not their fund, so RTI will be applicable. They are answerable. They are answerable. देखिए यहाँ पर RTI को इसलिए समझना जरूरी इस कंटेक्स्ट में है, इसलिए मैंने वो शुरू में पॉइंट रखा था कि यहाँ पब्लिक और प्राइवेट को समझना जरूरी है। Most of the time what is happening is RTI is also being used, although we all know that it has been a boon for a common man, a country. Transparency और accountability तो बहुत ही आई है, but कहीं ना कहीं misuse भी हुआ है। People are trying to score, or I mean, yes, they are trying to settle the personal scores. They are not getting selected for some post and they are asking for, I am telling you the real example of UPSC, they are asking for the names of the persons who have sit for the interview. Now court has rejected because it amounts to violation of privacy. It undermines their privacy issues. Because a person who is rejected, if he is asking for the name of those persons, obviously it is going to affect the transparency and accountability. But court has not rejected that point. That is Aditya Bandyopadhyay case, wherein court has allowed that yes, you are allowed to see your answer sheet, right? But the crux is that you are only allowed to see the answer sheet. You cannot ask for why only 5 marks, why not 15. And only your mark sheet. So yes, transparency is there. You will come to know that yes, you got out of 15, you got 5 marks. But you cannot question this, why only 5, I want 15. Then you become the paper checker and leave that to yourself only. So that is the issue. Yes. जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही जी। हाँ जी बोलिए। आपने मेंशन किया कि आरटीआई, सिमिलरली मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे था। मैं सोचा लेटर इन द टॉपिक लूंगा, तो मैं आपको कह के रखता हूं एक क्वेश्चन, जो आरटीआई का जो मिसयूज होता है जी, बेसिकली अगर समझो किसी का पर्सनल स्कोर किसी को सेटल करना है, लेकिन वो नहीं आ रहा है, लेकिन एक वेक्सिशियस लिटिगेंट बन गया है वो, जिसने समझो अगर एग्जांपल दे रहा हूं मैं, सिर्फ ऐसे एक सोसाइटी को उसको हैरेस करना है, वो हर मेंबर के अगेंस्ट 100 ऑफ कंप्लेंट्स डालता है जी जी। तो व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू ब्लॉक दैट पर्सन? See, we all are living in democracy, so just don't use this word block. Okay. No, the reason I will come to the, I am just saying that blocking, you cannot just ask someone that he should not file an RTI. So if, say for an example, that person is filing an RTI before the PIU and he's getting the reply, he will file a complaint or the first appeal. Let him file. See, I have seen in Central Information Commission, there was one air wing commander of Air Force, and he at that time filed more than 2100 complaints and second appeals. So let me give that example. Obviously, the other party never objected and they do not have the power to stop him. Obviously, forums are there. So finally, this person's actual hearing happened after 4 years.
from 2012 to 15, I think that person. So yes, even the forum understood that these are, I mean, because documents speak. Please try to understand. So when the documents itself are speaking that your only questions are that why this person is only appointed, how much salary he is getting, how much expenditure, the way the questions they are being asked, they have no relation to the public interest at large. So my reply is that we cannot stop anyone from filing a RTI. So blocking is not an issue in our hand. But yes, if that will reach to the forum, obviously the forum will decide that in a logical way. And also I just wanted to make one thing clear. Just by filing merely an RTI will not serve you any purpose. So a person who is facing this harassment of RTIs being filed against him should not be worried at all. So legally, a person should not be harassed by listening to that, yes, against me 51 RTIs have been filed. Are you getting me? If they are just for, because that person has a reply, and in the reply you will tell that why this person is going to, or this person is filing an RTI. So during the hearing or during your submissions, everything will be very much clear. See, so RTI is only the starting point. जी. RTI तो सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट होता है सर. समझ गया मैं. RTI से कुछ नहीं होता. RTI के बाद जो निकलता है ना, उसके बाद प्रॉब्लम आती है इन्फॉर्मेशन. राइट. देखिए, आपने कहा RTI के बाद जो निकलता है, मैं फिर कह रहा हूं कि RTI में जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं उन्हीं के जवाब में रिप्लाई आएगा. अगर ये पूछा गया है कि किसी प्राइवेट पर्सन के कितने, या चलिए पब्लिक के भी हैं, कि इसका अपॉइंटमेंट क्यों हुआ, सो क्यों का कोई क्वेश्चन नहीं होता. Why you cannot ask under RTI? There are some terms which you cannot. Why, for what, how. These are not the words to be used while filing an RTI. PIO can outrightly reject it or will not provide any information. So my point again is that let the person who is in a hurry to file the RTIs and think that he can settle his personal scores with the other person, let him file. But there, the forums are there. The legal angle itself is very much clear that you cannot harass the person or settle your scores by filing, just by merely filing an RTI. तो आपने कहा कि ये तो सिर्फ एक शुरुआत है. आप अगर ये सोचते हैं कि इससे आप कोई केस बना लेंगे, तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और इवन सेंट्रल इंफॉर्मेशन के जो डिसीजंस हैं, आप उनको देखिए जो ये बात करते हैं जहां पर RTI हैरेसमेंट हुआ है, तो उसमें क्या क्या डिसीजन दिए. द फॉरम्स दे आर वेरी मच क्लियर. आप उनको साइट कर सकते हैं अगर आपका ऐसा कोई क्लाइंट है तो, कि भाई ये तो बिल्कुल इसकी विद इन दैट स्क्वायर माय क्लाइंट्स केस इज फॉलो, और आप उसको कंप्लेंट को या फर्स्ट अपील को डिसमिस करा सकते हैं. एग्जैक्टली. यस, सवाल वही था बेसिकली. दैट इज अ वे ऑफ we can personally connect. I can tell you a lot of instances, I have a lot of work done on RTI. I have personally worked. I have written 3 books on them with reputed publishers. Raghav, you give the link of that particular book, Leading Judgments of Right to Information. Leading Judgments of Right to Information, published by Thomson Reuters. Okay. You give that link to him, and you give my contact number and email also to him, so that we can connect one-to-one. I'll share, sir. Yes. Thank you very much. Thank you very much. जी. तो आगे चले राघव, या किसी और का भी क्वेश्चन है? सर 1-2 क्वेश्चंस और हैं. बिल्कुल क्वेश्चन आंसर से ही बात क्लियर हो पाएगी. कराइए. Sir, Surendra Singh Solanki wants to ask, victim has filed a complaint to register FIR, but no FIR was registered by the police, and steps क्या लिए ये भी पता नहीं चला. Does the victim have the right to get the information from the police station regarding what steps have been taken by the police? बिल्कुल. यहाँ पर आप समझ लीजिए, आप उस केस से कंसर्न हैं. अगर आप केस के लिए पार्टी हैं तो आप इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं. एंड पुलिस इज अ पब्लिक फंक्शनरी. आप सभी को पता है कि FIR रजिस्टर करना, और अब तो 24 घंटे में उसे अपलोड करने की भी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही. तो FIR अगर नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई है, यू हैव ए राइट टू फाइल एन RTI.
और आपको उसका जवाब मिलेगा। अगर आपको वो पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर रिप्लाई नहीं कर रहा है, यू हैव ए राइट टू फाइल अ फर्स्ट अपील, वो भी नहीं हो रहा है तो स्टेट कमीशन में जाइए। और अगर आपको ऐसे असिस्टेंस नहीं हो पा रहा है, आप मुझसे पर्सनल 1-to-1 कनेक्ट करना, एंड आई विल हेल्प यू टू रिट्रीव दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। काफी केसेस में मैंने ऐसा किया, एक्यूज के लिए भी, विक्टिम के लिए भी, एंड अ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन विच वाज नॉट बीइंग प्रोवाइडेड वाज विद अस। तो ये आरटीआई से बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि विक्टिम जो है कोई थर्ड पार्टी नहीं है। विक्टिम को ये जानने का हक बनता है कि आपने मेरे केस में क्या किया। उन्हें डिनायल करना है तो वो किसी चीज को प्राइवेसी में रख करके कर सकते हैं कि ये चीज तो हम कोर्ट में करेंगे, वो उनका राइट बनता है। लेकिन अगर आप ये सोच लें कि हमें जवाब नहीं मिलेगा और हमारे पास कोई रेमेडी नहीं है, तो दैट इज नॉट एट ऑल अ गुड थॉट, आई वुड से। Right, sir. Mr. Solanki, you have the access in case you have a follow-up on this one. We'll move on to Mr. Rakesh Gawale. Sir, आपको मैंने access दिया, if you want to ask it on mic. सर ए पार्टी, जैसे ए पार्टी इज द प्लेंटिफ सर थोड़ा सा आप लाउड थोड़ी सी वॉल्यूम इंक्रीज कर लेंगे। सर ऑडिबल हूँ? जी जी। ओके, सो ए ने बी के ऊपर एक सिविल सूट फाइल किया है। ए ने बी के ऊपर एक सिविल सूट फाइल किया, दोनों प्राइवेट ही हैं? प्रॉपर्टी रिलेटेड, जी प्राइवेट है, मैं पूछ रहा हूँ, प्राइवेट है दोनों जने? प्राइवेट। ठीक है ठीक है। बी का ऑलरेडी एक हिस्टोरिकल केस था जिसमें वो कन्विक्ट घोषित हुआ था। कन्विक्ट घोषित हुआ था, ठीक है। हिस्टोरिकल केस था। अब ए को वो जो जजमेंट है, वो जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी अगर मिलती है, सो दैट विल हेल्प हिम इन हिज केस। अच्छा, so can he get the copy of that certified copy of the judgment from the honorable court? yes, RTI से once the judgment is pronounced आप कॉपी रिट्रीव कर सकते हैं। अब बात आती है सर्टिफाइड कॉपी की, तो अब आप रूल्स नए पढ़ लेना। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पर मेंशन है दैट बाय पेइंग अ पर्टिकुलर फीस यू कैन गेट द कॉपी। आप जो कॉपी की not related क्या कह रहे हैं? to A, even though if it is not related to A is not a party in that case. अच्छा, आपकी ने ये बात शायद मैंने आज समझी नहीं, सुनी नहीं, या देखिए, अगर आप सर्टिफाइड कॉपी की बात कर रहे हैं तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा सर्टिफाइड कॉपी के लिए कि बिकॉज पिटिशनर और द पार्टीज कंसर्न दे हैव द राइट। अब आप कह रहे हैं वो पार्टी नहीं है, तो सर्टिफाइड कॉपी आई थिंक इज नॉट अ रूट थ्रू आरटीआई। ये रूट बनेगा नहीं। बट मैं आपसे फिर इसमें कहूंगा कि यहाँ पर देखिए इंटरप्रिटेशन की बात है कि हम उसको कैसे लेकर के जाएं। यू आर बाय प्रोफेशन एन एडवोकेट? I'm a student. अच्छा, स्टूडेंट है। तो देखिए यहाँ पर क्या किया जा सकता है कि दैट वुड नॉट बी ए करेक्ट रूट। आरटीआई से तो नहीं होने वाला क्योंकि पार्टी नहीं है और यू कैन नॉट गेट द सर्टिफाइड कॉपी इन दोज टर्म्स। But if you establish a relation, people they sometimes do, and it happens that yes, people have got the certified copies. That is, I would say, how you move up that particular thing. तो अगर आप वो relation establish कर दें, जो कि लोग कर लेते हैं, और तो ऐसा करें तो मुमकिन हो पाएगा जी। Okay sir, thank you. ये एक रूट हो सकता है, अदरवाइज आरटीआई इज नॉट दैट पर्टिकुलर रूट। मैंने आपसे ना अभी एक प्रोविजन पढ़ा था, अगर आपको याद हो, 8 क्लॉज 3 था या 2 था, जहां पर मैंने लिखा था कि जो सबजुडाइज मैटर्स हैं, देखिए कुछ नॉन रिपोर्टेबल जजमेंट्स भी होते हैं, ये इशू वहां भी आता है। जो आपने बात पूछी है ना, जनरली वी थिंक दैट एनी जजमेंट वी हैव एक्सेस ऑफ द डे इट इज बीइंग प्रोनाउंस्ड, राइट? बट देयर आर नॉन रिपोर्टेबल। Non-reportable means that they won't be reported, they won't be in public domain. वहां पर भी आप उन जजमेंट्स को, क्योंकि वो क्लोज्ड एरिना में है, कोर्ट ने उन्हें नॉन रिपोर्टेबल माना है, तो आप उनको आरटीआई के रूट के थ्रू नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकते बीइंग अ थर्ड पर्सन। ये वाला जो कॉपी है, दिस इज अवेलेबल ऑन दी कोर्ट का ई कोर्ट्स वगैरह। मैं आगे बोलने वाला था कि अगर अब ऑनलाइन अवेलेबल है तो अब सर्टिफाइड में आप क्या एंगल लेना चाहते हैं मुझे नहीं पता, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इफ जजमेंट इज अवेलेबल ऑनलाइन, यूज दैट। उसकी एक ऐसी सी कॉपी निकाल लीजिए और उससे अपना यू डू दैट। मतलब ये भी किया जा सकता है। वो सबमिसिबल नहीं होता है कोर्ट में, फिर वो सर्टिफाइड कॉपी। मैं समझ रहा हूं आपकी बात को, लेकिन देखिए वी हैव टू मेक वे।
अब या तो दो ही तरीके हैं कि या तो ये मान लीजिए होगा ही नहीं और करेंगे ही नहीं, और अदरवाइज यू मेक द वे। ऐसा नहीं है कि कोई शॉर्ट ये हो गया कि सर्टिफाइड से ही हम कुछ उसका एंगल निकाल पाएंगे। अगर उस जजमेंट के बाद भी इफ वी कैन पुट इट इन सच अ वे, इंटरप्रेट इट इन सच अ वे दैट वी गेट द रिलीफ फॉर अवर क्लाइंट, देन व्हाट एल्स यू नीड। जी, थैंक यू सर। जी राघव, आगे चले। सर एक क्वेश्चन है, आपके स्टूडेंट का ही क्वेश्चन है, रोहन गुप्ता जी का। वो अच्छा। पूछ रहे हैं, सर आफ्टर सबमिशन ऑफ चार्जशीट कैन अ विक्टिम रिट्रीव इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू हिज केस? देखिए, मैं आपसे एक लाइन बताई थी, मैंने कहा था कि जब तक इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है। इन्होंने बाद में ज्वाइन किया था, अभी किया था? अभी किया सर। शुरू से। मैंने ना अभी एक प्रोविजन पढ़ा था रोहन, और ये 8 क्लॉज 81H है, इंफॉर्मेशन विच वुड इम्पीड द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन और अप्रीहेंशन और प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंडर्स। ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मांगी जा सकती है जिससे क्रिमिनल ट्रायल हैम्पर हो, या अगर क्रिमिनल ट्रायल चल रहा है तो आप बीच में हर रोज ये उठ करके पूछें कि आपने अभी तक क्यों नहीं किया। देखिए, हर रूट क्रिमिनल ट्रायल का आरटीआई नहीं है। आरटीआई इज नॉट द रूट फॉर एवरी क्रिमिनल ट्रायल स्टेज. It may be helpful for a person to know about whether the FIR has been filed or not, right? But you cannot, in a court proceeding, while a criminal trial is happening, during stages, at one stage, at other stage, ask for कि आज क्यों नहीं चार्जशीट फाइल हुई, पुलिस और कितने दिन लेगी, क्या हर केस में ही 100 दिन लगते हैं? दिस इज नॉट अ थिंग विच अ पुलिस इज, या वो आपको बाउंड नहीं है रिप्लाई बैक करने के लिए, और ये एक करेक्ट कोर्स नहीं है आरटीआई के। साथ साथ सुरेंद्र सोलंकी ने सही बात लिखी है, चार्जशीट इज नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट ऑल्सो। एफआईआर भी देखिए, आपको अपनी अधिकार है मांगने का, because you are connected with the case. मैंने जो अभी क्लियर किया था that the third party has no right to even ask for a FIR which has been filed against you. तो ठीक है, चार्जशीट को आप पब्लिक डॉक्यूमेंट अगर नहीं मान रहे हैं, और वो नहीं है, क्योंकि पब्लिक डॉक्यूमेंट को भी समझना जरूरी है, तो वो नहीं है, तो आरटीआई में if you are asking, then it won't be a correct course that you have to take. Yes. चले आगे। सर आगे बढ़ रहे हैं, एक शादाब जी को बस कुछ कंट्रीब्यूट करना है, उसके बाद आगे जी जी। सो मुझे गवर्नर जी का जो क्वेरी था उसके ऊपर एक छोटा सा जवाब देना था जी कि प्लीज। आपको आपके दूसरे मैटर के अंदर कॉपी चाहिए, सर्टिफाइड कॉपी जिसमें आप पार्टी नहीं है। तो आप बेसिकली नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं कि वो केसेस के अंदर, वो कोर्ट के अंदर एक थर्ड पार्टी एफिडेविट हम लोग फाइल करते हैं, प्रोवाइडिंग डिटेल इंफॉर्मेशन हाउ इट इज कनेक्टेड टू योर एप्लीकेशन। आप उसको कनेक्ट करने के लिए थर्ड पार्टी एफिडेविट आप फाइल कर दें तो आपको सर्टिफाई मिल जाती है। मैंने आपसे कहा, फिर आपने ये कनेक्ट किया दैट यू आर कनेक्टेड। हमेशा आरटीआई में पब्लिक इंटरेस्ट की एक बात याद रखिएगा, और हाउ यू आर कनेक्टेड विद दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, और आइदर पब्लिक इंटरेस्ट एट लार्ज इज इन्वॉल्व। यू कैन नॉट सेटल, प्लीज मेरी बात को नहीं भूलिएगा, आरटीआई वहां फेल है जहां आप अपने पर्सनल स्कोर्स को सेट कर रहे हैं। अथॉरिटीज को पता है, अथॉरिटीज को पता है कि उन आरटीआई को क्या करना है, और आरटीआई एक्ट कोई इसमें आप एम्पावर नहीं करता टू सेटल द पर्सनल स्कोर्स। ये कोई आरटीआई एक्ट आपको 2005 बिल्कुल एम्पावर नहीं कर रहा है टू सेटल द पर्सनल स्कोर्स विद योर फ्रिवोलस filing of RTIs, and neither you can threat someone with the filing of those particular RTIs. वो मैंने शादाब जी को अभी कहा ही था कि कोई कितनी भी कर ले, ये कोई डरने की बात नहीं। Obviously RTI is not at all, I would say, strictly a penal statute, और इसमें पेनल्टी अगर किसी पर लगती भी है तो आपको पूरे एक्ट को पढ़ लेना, वो बेचारे बस पीआईओ पर लगती है ना, फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी पर लगेगी। पीआईओ इज द फर्स्ट पर्सन, और उस पर भी तब लगेगी जब वो जवाब नहीं देगा कुछ दिनों तक। तो आरटीआई एक स्ट्रिक्ट कोई पिनल स्टैच्यू नहीं है। यू कैन नॉट जस्ट थ्रेटन समवन विद द आरटीआई। ये मैं मिसयूज के बारे में बात कर रहा हूँ, मेरा अभी आप पॉइंट ऑफ व्यू समझ लेना, मैं आरटीआई के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट आई एम जस्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड दैट पीपल बाय फाइलिंग द आरटीआईज think that they can threat someone. That is not the correct approach. You can get the relief. You being a genuine information seeker can expose corruption. You could be a good whistleblower by filing RTIs, but you cannot misuse the RTI. तो
इस चीज को हमें नहीं भूलना है कि हम आरटीआई को मिस यूज तो कर ही नहीं सकते हैं. वी हैव नो राइट टू डू दैट एंड नाइदर द एक्ट परमिट्स फॉर. यस, थैंक यू सर, आगे बढ़ सकते हैं. ओके. देखिए, तो हम सेक्शन 8S तक मैंने आपको बता दिया था कि हमने ये कहा कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मांगी जा सकती जिसमें इन्वेस्टिगेशन या प्रोसिक्यूशन हैम्पर हो. साथ साथ आप कैबिनेट पेपर्स, मिनिस्ट्रीज, सेक्रेटरीज में देखिए, यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम आती है जब लोग ऐसी इंफॉर्मेशन मांगते हैं. पीपल ट्राई टू आस्क फॉर सम इंफॉर्मेशन जहां पर वो रीजंस मांगते हैं. आरटीआई में वाई, हाउ, हाउएवर या क्वेश्चन फॉर्म में नहीं पूछ सकते. आप इंफॉर्मेशन क्रिएट करने के लिए नहीं बोल सकते. वॉट एवर इंफॉर्मेशन अ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर विल हैव, विल प्रोवाइड दैट. इसका एक एग्जांपल बताता हूं. तो किसी ने एक आरटीआई लगाई थी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में, और आपको सुन के हंसी आएगी, तो उसकी आरटीआई थी कि क्या रावण के 10 सिर ही थे. नाउ यू टेल मी व्हाट शुड बी द आंसर और व्हाट शुड बी द लॉजिक. और वो सेकंड अपील तक में सेंट्रल इंफॉर्मेशन तक आई थी. वो I only have seen that RTI, मतलब मैंने भी देखी वो. But I am just telling that what should be the answer of this? Can you think that it is by a prudent thinking a question to be asked? आपको पूछना है तो you can just ask it for your I mean curiosity. But if you want it on record, who can tell that whether the Ravan has 10 and क्या जवाब होगा. तो आप ये खुद ही सोच सकते हैं कि क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन फॉर्म में नहीं आप पूछेंगे. जब भी आप आरटीआई में बात करेंगे, whenever you are asking for a question, you don't have to ask a question in a question format, while asking or filing a RTI application. Therefore, if you think that you will get the cabinet papers, if you will be able to get the papers related to ministries, secretaries or secretariats, which are confidential in nature, which are just a hand type notes, you cannot ask for that. इसमें एक बात और भी जोड़ना चाहूंगा, जब तक जजमेंट फुली प्रोनाउंस नहीं हुई है तो वो पब्लिक डोमेन में नहीं है, या फुल कोर्ट में प्रोनाउंस नहीं हुई है तब तक वो जजमेंट नहीं है. तो अगर आपको लग रहा है कि आप आरटीआई में जजमेंट का ड्राफ्ट मांग लेंगे तो आप गलत हैं. यू कैन नॉट आस्क फॉर अ ड्राफ्ट ऑफ अ जजमेंट ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट until and unless it is. And also ये भी केस हुआ है जहां पर किसी ने जजेस की जो वो कोर्ट में राइटिंग करते हैं उसकी कॉपी मांगी थी, तो वो आउटराइटली रिजेक्ट है, वो आरटीआई के दायरे में नहीं. I mean, you are not allowing even public functionaries to work and they can't even use pen and paper, and you are filing an RTI asking for the कि उस दिन उन्होंने जो पेपर यूज किया था उस हियरिंग में, we want that paper. You cannot ask for that particular thing. तो आपको ये समझना होगा कि ये एक तरह की एग्जाम्पशन है और आप नहीं मांग सकते. साथ साथ कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसका पब्लिक इंटरेस्ट से कोई दूर दूर का नाता नहीं है, there is no concern of public interest in that particular activity, you cannot ask for. मैंने आपसे कहा public interest is a very wide term, but simply we can understand that public interest is something which will affect the society at large, not just your personal relatives, your neighbors, or the persons who are a party to it is not a matter of public interest. Public interest is something which is going to benefit at large. खैर पीआईएल मैटर्स ही पब्लिक इंटरेस्ट, जो पीआईएल मैटर्स का जो बेस है वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ही है. इसलिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में काफी आरटीआई ने हेल्प करी है, मैं आपसे ये बता सकता हूं. तो यहाँ अगर आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करना चाहते हैं तो आप आरटीआई की मदद ले सकते हैं. बट मेक श्योर that your PIL subject or PIL subject must be related to the public at large and should not be such which is actually a private one. So ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा. और साथ साथ आप कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं पूछ सकते जिससे किसी की प्राइवेसी का इन्वेजन हो. ये एक बहुत बड़ी समस्या है. Frivolous RTIs have been filed asking for how much a person earns from his particular job, how much increment he gets.
देखिए ये तो सो मोटो डिस्क्लोजर में किसी भी संस्था को बता देना चाहिए कि गवर्नमेंट है तो दैट हाउ मच अ पर्सन इज अर्निंग, वो तो सेक्शन 4 में कवर होना चाहिए। बट इफ यू आर आस्किंग कि उसको आपने एलटीसी में कहाँ भेजा, उसने कितनी बार हेल्थ का क्लेम किया, then amounts to privacy until and unless you are able to specify कि अब हेल्थ के नाम पर इन्होंने 2 करोड़ रुपए ले लिए हैं, now it is a suspicious case। हो भी सकता है अगर कोई रेयर डिसीज नहीं है तो डॉक्टर कंसल्टेशन के ही अगर अब 2 करोड़ रुपए ले लिए हैं बीइंग अ प्राइवेट एम्प्लॉय, तो नाउ इट इज ए मैटर ऑफ सस्पिशन एंड इफ यू आर फाइलिंग फॉर दैट maybe you can get a relief in terms of because you have raised a public interest issue। और मैं आप सभी से इस बारे में ये भी कहूंगा कि दैट यू कैन चेक SC अग्रवाला मोस्ट ऑफ द केसेस बीइंग फाइल्ड। तो अगर आप वो देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि हाउ सम ऑफ द अथॉरिटीज विच वर क्लेमिंग दैट दे आर प्राइवेट, हाउ दे हैव बीन एक्चुअली बीइंग डिक्लेयर्ड द गवर्नमेंट फंक्शनरीज, क्योंकि उनका काम गवर्नमेंट का था। जरूरी नहीं है पैसा जो है उसी से ही। देखिए BCCI का अभी भी बहुत इशू है, अगर आपको पता हो तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसके बारे में काफी बार लोढ़ा कमेटी की लास्ट रिपोर्ट थी, अभी भी BCCI इज ए प्राइवेट एंटिटी। But see that BCCI performs a public function। टीम इंडिया एक ही है, 11 प्लेयर्स उसी के ही हैं, दे रिप्रेजेंट इंडिया, दे गो फॉर द वर्ल्ड कप। जहां पर भी रिप्रेजेंट होगी इंडियन टीम होगी तो वो ही 11 खिलाड़ी होंगे। फंडिंग वो कहते हैं कि हम अपनी जनरेट करते हैं, कैन दैट बी द सोल क्राइटेरिया फॉर बीइंग देम टू से दैट वी आर नॉट कवर्ड बाय RTI? तो मैं ये क्वेश्चन पोज करके जा रहा हूं आप सभी के लिए कि क्या सिर्फ फाइनेंशियल क्राइटेरिया है, क्या पब्लिक फंक्शन परफॉर्म करना डज नॉट मेक यू टू और बाउंड यू टू कम विद इन द परव्यू ऑफ RTI? तो आज की बात इतनी ही रखते हैं राघव, या कैन वी कंटिन्यू? यू से यस Sir, we can definitely continue if you Okay, think we have something to deliver. Okay, no issues। तो मैं आपसे यही कह रहा था कि बिकॉज BCCI के बारे में आप जरूर सोचिए, और मेरा इसमें जो फूड फॉर थॉट है वो यही है कि क्या सिर्फ फाइनेंशियल टेक अप फ्रॉम द गवर्नमेंट विल ओनली मेक यू अ पब्लिक फंक्शनरी और ब्रिंग यू विद इन द परव्यू ऑफ RTI, और यू परफॉर्मिंग द पब्लिक फंक्शंस विल ब्रिंग यू विद इन द डोमेन ऑफ RTI? तो इसको सोचिएगा, लोढ़ा कमेटी रिपोर्ट को पढ़िएगा, उससे पहले भी जो है लॉ कमीशन की रिपोर्ट है, प्लीज हैव अ लुक एट दैट। ऑल्सो सी देयर आर सम एजेंसीज ऑल्सो विच आर नॉट कवर्ड within the purview of RTI। Can anyone tell me which is that particular section, or is there is something mentioned in the RTI which exempts some of the authorities to not to be falling within the domain of RTI? किसी के पास कोई जवाब है? बताइए। इनका माइक देख लीजिए, he is raising I think a hand। Security agencies like CRPF, CBI, Yes. and all these kind of agencies, then I think even PMO is not covered in that, and PMO आप नहीं कहिए, PMO नहीं लिखा है, इसके लिए आपको RTI एक्ट का सेक्शन 24 देखना है, उसके आगे वो शेड्यूल में मेंशन है जो रूल्स हैं, उसमें ये सब सिक्योरिटी एजेंसीज दी हुई हैं जो आपने मेंशन करी, जनरली सिक्योरिटी एजेंसीज हैं। जस्ट डोंट से दैट PMO इज सिक्योरिटी एजेंसी। PMO प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है। आप लगता है उस RTI वाले केस को सुन लिया आपने, जो जिसमें ये था कि ये जो फंड था प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, वेदर दैट इज विद इन द डोमेन ऑफ RTI और नॉट। तो उसका जवाब यही था कि क्योंकि ये जो फंड है ये एक सेपरेट फंड है, इसका गवर्नमेंट से रिलेशन नहीं है। द रीजनिंग दे हैव गिव, दैट इज व्हाई दे सेड दैट इट विल नॉट बी फॉलिंग विद इन द परव्यू ऑफ RTI। लेकिन जो दूसरी तरफ से कहा गया था वो ये कहा गया था क्योंकि ये पब्लिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे इस फंड से, दैट इज व्हाई इट नीड्स टू बी नेसेसरली विद इन द परव्यू ऑफ RTI ओनली। तो वो जजमेंट भी आप सुप्रीम कोर्ट की देख सकते हैं जहां पर ये बात थी। तो जब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एग्जम्प्टेड इंफॉर्मेशन, देखिए होता क्या है कि if you now want to know the corruption being happening or
the day-to-day affairs or the issues of public interest within the security agencies, CISF, CID, CBI, you will not be able to know. And the thing is simple. Why? Because these are exempted from disclosure section 24. But there is a thing which you need to know, that these organizations also are within the purview of RTI, if someone establishes that a human right violation has occurred, and he establishes that, he or she establishes that there is a human right violation within 48 hours, these agencies also need to provide that particular information. तो अगर आप ह्यूमन राइट वायलेशन का एस्टेब्लिश कर देते हैं, ये कह देते हैं कि हमारे साथ हुआ है, then you are entitled to receive the information within 48 hours. Also, one thing to know, that a person who is being jailed, who is in jail, he has no means to file an RTI. He can get the RTI filed through the jailer and ask for the, and if he is facing some human rights violation in the particular jail, he can file the RTI and can get the information within 48 hours. तो ये याद रखिएगा कि जब हम बात कर रहे हैं RTI की, तो human rights violation में 48 hours में the information needs to be compulsorily provided. यहाँ तक बात clear है? Is everything clear till this point, Raghav? कोई query और या कोई वो है तो देख लीजिए. Otherwise, we can move to the other issue. अभी नहीं है सर कोई भी query, we can move. Okay. Now there is a big concern when it comes to privacy issues. There are a lot of times when privacy infringement has happened, or the glaring example is that what happened is that the orders of the Central Information Commission, they used to mention the name of the person who has filed the appeal. So it was actually a violation of privacy, which was being, this case was being taken up in Supreme Court, and court actually said that they are actually whistleblowers and their identity needs to be protected. So now this practice now has been not in continuance. And this was a major concern, because if you are filing appeal RTI and those orders, they are available online, and if your address is mentioned, your phone number is mentioned, your email is mentioned, you are at great risk. And you can see the news, I think every 2 or 3 days they are there that one or the other RTI activist has been killed because they have tried to expose the sand mining, because they have tried to expose the corruption or irregularities within the system. And that is exactly the issue in concern of RTI and the conflict of privacy issues. Yes, definitely you have this right of information, but not at the cost of someone's privacy. You cannot ask for the public health records of a person who is admitted in the hospital and make it public. You should establish a good, genuine public cause or public interest to justify you being asking that particular information. Just because you feel that that person is corrupt does not entitle you to file a RTI and misuse in that particular way. RTI is a great source. Yes, RTI is a great source in terms of exposing the corruption, protecting the accountability, maintaining transparency. But if you think that by using RTI you can take up someone's privacy, that would not be a correct route, and actually you are trying to do the defamation. There are some of the orders where court, generally this act that does not prescribe for penalty to the person who is filing the RTI. नहीं है कहीं भी, but एक दो कमिशंस ने ऐसा किया था, मुझे नहीं पता वो अपील में गए कि नहीं, कि उनके ऊपर फेक RTI लगाने का वो किया था, जो कि करेक्ट कोर्स नहीं था. बट आई एम जस्ट सेइंग दैट देयर नीड्स टू बी समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट आल्सो. लेकिन मैं लास्ट में आपको 2 चीजें बताना चाहूंगा कि अब चीजें बहुत चेंज हो गई आफ्टर 2018 या 19. नाउ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, दैट वाज exactly
running like, तभी आपने पहले देखा भी होगा कि because the people, they were independent, financial autonomy was there. Now that part has been tweaked. अभी क्या है कि जितने भी मेंबर्स हैं, कमिश्नर्स हैं, वो सब रिटायर्ड आएंगे, ब्यूरोक्रेट्स आएंगे, उनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, कोई पे स्केल नहीं है. पहले उनका they were being at the same level as that of a सुप्रीम कोर्ट जज, जो कि अब नहीं है. तो वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट और जो गवर्नमेंट अपॉइंटीज होने की वजह से now it is not running in that way which it was running during the 2005 to 2014 or 15, I would say. And yes, state commissions, they are always under the or within the purview of state government. And yes, because they are the information providers, so they have the control over the information. तो section 4 0 हो जाता है यहाँ पर. आप ही information provider हैं और आप ही मना करेंगे, यानी सो मोटो डिस्क्लोजर की बात ही नहीं है. It means you have to file for information, asking for information and then get the information. यहाँ section 4 की applicability 0 हो जाती है. Most of the times you go to the websites, you check the websites and you will find nothing on the page with regard to RTI disclosure. सिर्फ एक act upload करके छोड़ देते हैं, जबकि उस column में आपको अपने सो मोटो disclosure करने हैं in terms of how many employees are there, how many vacancies are there, और all the other information, जो कि कोई नहीं करता, इसलिए RTI फाइल करने की जरूरत पड़ती है. So that is it from my side for today's session. We will be connected for the other session as it will be informed by Mr. Raghav. So thank you everyone for patiently listening to me, and if still you have some question or something, you can ask me. Yes. Guys, 2 minutes for everybody to pose their questions. If in case you have any, I'm looking at the chat box. In the meantime, I am taking you to the RETS and PIL course that we have created, which is going to be launched around the first week of August, which is right there on your screen, I guess. I have resumed the share now, and this will most obviously be covering all about writs and public interest litigation, जिसमें हम उसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में बेसिक्स जो हैं, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में कैसे काम होता है, रिट जुरिसडिक्शन में कैसे काम होता है, अपीलेट में कैसे होता है, एंड एसएलपी में कैसे होता है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स को एग्जॉस्टिवली कवर करेंगे. This is going to be around 10 to 12 hours course, and you've already taken the session today with sir, and I hope everybody is as amazed and as excited as I am. And जिस तरह से effortlessly sir ने ये lecture दिया है, we're going to be listening to a lot more and consuming a lot more in the coming sessions. So you can use the link that I've shared in the chat box, and you can visit the landing page and do what is needful. In the meanwhile, sir, Arshdeep ji ka ek question hai. Yes. Why we get response on the very last day? On the very last day से क्या पूछना चाह रहे हैं? Last day after completion of 30 days or after? See, Act provides for that. Yes, you can file for a penalty to be imposed on only on PIO. Per day it is 250 and not more than 25,000 can be imposed. So if you are not getting the reply within time, you can file for asking for penalty to be imposed on PIO. Per day it is 250 and which can be maximum 25,000. So, and with regard to why we get the response always last time, तो देखिए information उन्हीं के ही पास है. RTI Act आपको empower कर रहा है, but still time frame है. But if they are replying on last date, then that is fine. But if not after last date you are receiving, I mean, time limit is completed and still you are not getting reply, or you are getting something which is illogical, which is not related to your question, you have the remedy to go to the file commission to file the complaint before the commission and ask for the penalty to be imposed on that particular PIO. Right, sir. Yes. Mr. Singh, you have the mic for any follow-up. In the meantime, we'll give it to Mr. Mittal.
lately, like what I've been observing is there is one very big issue. Most of the PIOs, they neither give their name or contact number, email, and secondly, they don't give any reply. They simply attach some circulars, notices, etc., which may not be relevant at all with your inquiry, and that's all they do. So, I mean, this is very disturbing trend, and even if we file appeal against it, no response is forthcoming. Even in the appeal, you get similar kind of notice or publication or something, and no proper response is received. So how to See, deal I with it? can tell you one thing, that no PIO is obliged to give his personal mobile number or email ID to the information seeker. So you just get the name, letterhead is there, you can contact to the concerned office and the concerned email ID. So that is the answer to your first issue. No PIO is obliged to give the personal contact information of that particular, because that will infringe his privacy. You don't know, the people bombard the PIO with questions and questions. So if office email is there, office phone number is there, that is sufficient. If that is not there, that is a matter of concern. लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि ये तो मेंशन होता है उस पर, मैंने जहां तक देखा है, अगर आपके केस में वो नहीं है तो आप देखिए. सेकंड बात आती है that the disturbing trend you are saying, that they are actually not replying the correct way. Most of the time this happens only. They just not deny the information, they give some illogical reply which is not connected to the question. Obviously you have a right to file and complain in terms of that you have received correct route is appeal, because you are filing the against the illogical reply. Complain you file when you do not get the reply. So if you are not receiving the reply, you file the complaint to the upper authority, and if you are receiving a illogical thing, then you file a first appeal. But most of the people do not know that complaint and PIL or a information seeker RTI is within the department only. यानी कि जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है जो और PIO है वो एक ही डिपार्टमेंट में बैठते हैं. लोगों को ये नहीं पता है कि कंप्लेन और सेकंड अपील जो है वो स्टेट कमीशन और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में होती है. तो आप वहां फाइल कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली if the reply is illogical or if there is a delay in providing of the information, that will be strictly dealt with. Even now if there is a change with regard to which I have told that there is no financial autonomy, and still now there is no that status of the information commissioner which they used to enjoy during the previous one, like they were being their status was with like that of a Supreme Court judge. तो अब वो नहीं है, but अगर आप ये करेंगे तो then definitely you have a remedy. सिर्फ रेमेडी यहाँ तक ही नहीं है, अगर आपको लगता है कि कमीशन के बाद भी नहीं हो पा रहा है तो अपील जो है वो हाई कोर्ट में जाती है और फर्दर अपील सुप्रीम कोर्ट में जाती है. RTI एक्ट, यू कैन चेक दैट. Sir, Mr. Solanki has asked, to whom do we file an application for imposing penalty on PIO and under which section? देखिए, जो हमारी पेनल्टी की बात है वो सेक्शन इसी में ही लिखा हुआ है, सेक्शन 7 है या 8 है कि 250 रुपीज पर डे एंड 25,000 रुपए मैक्सिमम कैन बी इम्पोज्ड ऑन द PIO. अब PIO ने अगर जवाब नहीं दिया है तो आप कंप्लेंट फाइल करेंगे टू द अपीलेट अथॉरिटी. कंप्लेंट फाइल करेंगे और कि वो जवाब नहीं मिला है, एंड अपीलेट अथॉरिटी हैज ए राइट टू पेनलाइज हिम. और अगर जवाब दिया है इलॉजिकल है, कंसर्न नहीं है क्वेश्चन से, तब भी आपके पास राइट है टू गेट हिम पेनलाइज्ड. बट ओनली PIO विल बी पेनलाइज्ड ओनली एंड नो अदर पर्सन विल बी पेनलाइज्ड. आप सोच रहे हैं कि फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी फ्रॉम द डिपार्टमेंट ओनली विल बी पेनलाइज्ड, तो नहीं है. सिर्फ आप PIO को पेनलाइज करा सकते हैं, एंड दैट टू मैक्सिमम 25,000 पर डे. 250 है जी. That's fine. Yes, sir. Sir, I think we are done with the questions. I think we can wrap it up here. Okay. Thank you so much for giving your time today, sir. Okay. And looking forward to the course starting. And before we all leave, guys, मैंने आपके साथ share किए हैं 1-2 links. I have shared sir का Amazon profile also. You can check out the books that he has written. Sir, if I'm not wrong, it shows me 81 books that you have written. Is Yes, that right? actually it is more than 100.
Some are not updated on website. ओके Yes. सो सर की लाइब्रेरी में से आप देख सकते हैं कि कौन सी किताब आप उठाना चाहते हैं एंड बाकी हमारा एक कोर्स रिट्स एंड पीआईएल्स पे आ रहा है, मैंने आपके साथ सारे लिंक शेयर कर दिए हैं एंड ऑब्वियसली विल बी सर्कुलेटिंग ऑल द मैसेजेस ऑन द चैनल्स दैट यू आर कनेक्टेड टू अस विद एंड we'll look forward to meeting again very soon. Okay. Thank you so much, sir. Thank you, Okay, thank you. everybody. Thank you. Bhaskaran ji, you are a little too late for the question, but you can send it to me on chat and maybe I can pose it to sir and we can have it cleared in the next session whenever we have it. All right. Thank you, everybody.